Hello dear student, welcome you back in this physics video, and in today's video we will solve some of the numerical which is based on the speed of sound, frequency of the sound, or that wavelength of the sound, or echo method as well. Okay, so here we are having very first question given. A person has a hearing range from 20 Hz to 20 kilohertz. What are the typical wavelength of sound waves in air corresponding to these two frequencies? ठीक है, तो जो ऑडिबल रेंज है हमारे पास वो 20 से 20 किलो हर्ट्स के बीच में लाई करती है। तो इन दो फ्रिक्वेंसी के लिए जो वेवलेंथ है उस साउंड की एयर के अंदर वो कितनी है? So take the speed of sound is 344 meter per second. Okay, so one important thing, speed of sound is given in air. Second thing, there are the two frequencies and we have to find this wavelength over here. Okay, so first we need to understand how do we find out the speed of this sound. Okay, so that sound is a wave, and this wave, its speed is given by frequency into wavelength. This is the formula. Okay, where speed is given by, if that speed is less than light speed, so it is v, and frequency is given by f, and wavelength is given by lambda. Okay, this is the formula. And if light speed is there, so that time you can write this as f into lambda. So remember that if speed of that wave is less than light speed, then you can write it as frequency into wavelength, or if this is traveling with the light speed, then it is c is equal to frequency into wavelength, and where frequency is reciprocal of the time period. Okay, so we can also note it down, frequency is reciprocal of time period. This is the important formula. Now here we are given that there are the two frequency. Let us suppose f1 is 20 hertz and f2 is 20 kilohertz. तो हमारे पास f1 और f2 गिवन है यहाँ पर. Now the speed is given, so it is that of 344 meter per second, and this is second sound, its frequency which is 20 किलोहर्ट्ज़. तो इसकी भी जो हमारे पास स्पीड है वो 344 मीटर पर सेकेंड है. Therefore what will be the wavelength? So from here we can see that v is equal to frequency into wavelength. That implies lambda is equal to v by frequency, so which is 344 upon में that of 20. Okay, and thus we get that it is, and this is 17 to 34, and it is that of 17.2 meter. While this wavelength for the second one, so we will get it is the first wavelength, and the second wavelength that it will be frequency of this second one is f2. Thus it is that of 344 upon में, this is going to be 20 kilo. So 20 kilo means 10 की पावर 3 hertz. So therefore it is 10 की पावर 3, and we will solve it. So finally we will write this answer, which is of that 17.2 into 10 की power minus of 3 meter. This will be the answer over here. Now look to this question number 2. A longitudinal wave of wavelength 1 centimeter wavelength travels in air with a speed of 330 meter per second. Calculate the frequency of the wave. Can this wave be heard by human being? तो इसमें पूछा गया है कि ये जो साउंड है यहाँ पर क्या वो ह्यूमन बीइंग सुन सकता है या नहीं सुन सकता. तो ह्यूमन बीइंग कैन हियर ओनली दोज
sound whose frequency is between 20 to 20 kilohertz. So let us to see इसकी frequency कितनी आती है. So here that of wavelength को lambda से लिखते हैं. So it is 1 centimeter और in meter it will be 10 की minus of 2 मीटर. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर हमारे पास 10 की पावर माइनस 2 मीटर के इक्वल होता है. सो इट इज़ गोइंग टू ट्रैवल विद दैट स्पीड विच इज़ 330 मीटर पर सेकेंड. So therefore what will be the frequency then? तो frequency हमारे पास this is equal to as already formula written. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड है ना वो लाइट की स्पीड से कम है, इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है हमने. So thus we will have this frequency is equal to speed upon में wavelength and it is 330 upon में 10 की पावर minus of 2. And if we take this denominator to the numerator, so the power will become in plus. It is 10 की power 2. So 2 zeros over here, 1 is here. So there it is 3 0. So it is 1 2 3. Okay, so thus we got over here in our answer it is 33,000 hertz. ठीक है, सो नाउ द थिंग इज देयर, अगर फ्रिक्वेंसी 33,000 हर्ट्स है तो क्या ये ऑडिबल है? इज दिस ऑडिबल? वी विल से दैट जो हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज है वो तो 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स होता है. ठीक है, तो ये जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, अपर रेंज से भी ज़्यादा है, तो इसलिए क्या हो गया, नो. ओके, दिस साउंड इज़ नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन बीइंग क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड है. In question number 3, an echo is returned in 3 seconds. So this is the case of echo and this echo is in 3 seconds. What is the distance of reflecting? So we have to find out this distance of reflecting surface from the source. Given speed of sound is 300. Okay, so 342. So first the thing is given to us, जो साउंड स्पीड है वो 342 मीटर पर सेकेंड है. Second thing which is given to us, that time of echo is there, it is 3 second. It is 3 second. So the third thing they are asking us that the distance. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का. तो एज ऑलरेडी वी आर नोन कि हमारे पास जैसे ये साउंडिंग सोर्स था, तो ये साउंडिंग सोर्स से जो साउंड है पहले तो ये क्या करती है, उस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तक जाती है, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होती है. ठीक है, सो द टाइमिंग इज़ नोटेड ओवर है. तो जो टाइम है वो कैसा बन गया हमारे पास, इक्को टाइम बन गया. सो ऑलरेडी कंडीशन इज़ नोन कि जो टाइम है वो मतलब कि या तो 0.1 सेकेंड होना चाहिए, नहीं तो ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड होना चाहिए इक्को के लिए. तो ये 3 सेकेंड हो रहा है, तो इसका मतलब दो अलग अलग से साउंड सुनेंगे. ठीक है, तो इसमें ये जो डिस्टेंस है अगर जाने के लिए वो डी लेता है तो वापस आने के लिए भी डी. तो इसलिए इक्को के केस में डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या था, इट इज़ स्पीड इनटू टाइम बाई 2. नाउ वेयर स्पीड, अब ये जो स्पीड है वो तो लाइट की स्पीड से कम है, इसलिए वी यूज़ कर रहे हैं ना. सो दस वी आर हैविंग इट इज़ 342 इंटू 3/2 and which in turn is equal to that of 1 7 and it is 1, and in multiply with this one we are getting 3 1 ja 3, 3 7 21 and 3 2 ja 5. So it is 513 meter. So thus we obtained over there this source जो साउंडिंग सोर्स है वो इस रिफ्लेक्टेड सरफेस से 513 मीटर डिस्टेंस पर है. Now this is question number 4. A pendulum has a frequency of 5 vibration per second. तो पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी है 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड. सो गिवन ओवर हेयर फ्रिक्वेंसी इज़ 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड. सो इट बिकम्स हर्ट्स. ठीक है, पर सेकेंड को हम हर्ट्स में लिखते हैं. सो एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स द पेंडुलम एंड गिव्स अ गन साइमल्टेनियसली एंड फायर्स अ गन साइमल्टेनियसली. He hears the echo from the cliff after 8 vibration of the pendulum.
if the velocity of the sound in the air is 340 meter per second, what is the distance between cliff, what is the distance between the cliff and observer? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक पेंडुलम है वो 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशन करता है, और एक ऑब्जर्वर पेंडुलम को स्टार्ट करता है और साथ ही साथ वो गन को भी फायर करता है। और जैसे ही उसने गन को फायर किया तो उसके बाद उसको जो डिस्टेंट क्लिफ मीन्स एक छोटी सी हमारे पास हिल टाइप है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, साउंड रिफ्लेक्ट बैक होकर के उसके पास आती है, ठीक है। सो ही ऑब्जर्व दैट जब पेंडुलम ने 8 वाइब्रेशन की थी तो उस वक्त जो साउंड है वो उसको वापस सुनाई थी, ठीक है। तो इसलिए एट व्हाट डिस्टेंस दिस क्लिफ इज़ फ्रॉम हिम। तो हमारे पास बात यहाँ पर आती है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला तो हो गया हमारे पास, क्योंकि इक्को हो रही है यहाँ पर, दिस इज़ द इक्को, तो इसलिए स्पीड इनटू दैट टाइम बाई 2, ठीक है। तो बात आती है टाइम कितना है, ठीक है। सो फॉर दिस पर्पज़ वी हैव टू सी जो हमारे पास 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही थी, 1 सेकंड में वाइब्रेशन हो रही है हमारे पास 5, ठीक है। तो 8 वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लिया गया, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो टाइम है दैट वी नीड टू कैलकुलेट, एंड देयरफॉर ओवर हियर एज वी आर नोन कि जो रेसिप्रोकल ऑफ दिस टाइम पीरियड होता है वो फ्रिक्वेंसी है, सो दैट इम्प्लाइज टाइम पीरियड विल बी 1/f हो जाएगा। 1/f कहने का मतलब होगा इट इज़ 1/5। Okay, so thus we obtained over there, it is 0.2 second. Okay, this is the time period, ये हमारे पास टाइम पीरियड है, ठीक है, उस पेंडुलम का। देयरफॉर एक वाइब्रेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर जो टाइम लगता है इट इज़ ऑफ 0.2 सेकेंड। सो टाइम फॉर 8 वाइब्रेशन, तो 8 वाइब्रेशन के लिए कितना होगा, अगर एक वाइब्रेशन के लिए 0.2 है तो सो फॉर 8 वाइब्रेशन टी इज इक्वल टू 8 इंटू 0.2 विच इन टर्न विल बी 1.6 सेकेंड। दिस इज़ द टाइम ओवर देयर, ठीक है। तो इसलिए आफ्टर 8 वाइब्रेशन उसको सुनाई दिया, यानी कि 8 वाइब्रेशन का मतलब हो गया 1.6 सेकेंड के बाद उसको वो साउंड सुनाई देती है। सो दैट वी विल हैव this distance is equal to speed already given 340 into that 1.6 upon में 2, and which is equal to over there we can cancel this one, so it is 170, and over there this decimal if we remove, so this will cut the zero of that's 17 into 16 will come. So thus we are getting this is as 272 meter. Okay, so this is that answer of that the distance between cliff and this person. Okay, so with the help of pendulum we have first determined that how much is the time taken for 8 vibration and speed frequency given, so we use it in the formula. So that's all from my today's video. Thank you for watching it. Have a good time to every one of you.